A very good afternoon to everyone gathered here. As the sun shines beautifully over our Lovedale campus, we are here to celebrate something brighter, the spirit, the soul, and the talent of our school. We are your hosts for today. I'm Namit, here to keep the energy high and the spotlight shining just right. I'm Haley, bringing sparkle, smiles, and a whole lot of spirit. And I'm Vaishnavi, here to guide you to the energy, elegance, and emotion of every act. Welcome to the variety entertainment segment of our 167th Founders Day celebration, a vibrant journey of music, movement, and meaningful messages. On behalf of the Lawrence School Lovedale, we are honored to welcome back the class of 1975 as they celebrate their 50th reunion. Among the many incredible alumni who walk through these halls, there's one in particular who turned his passion for nature, wildlife, and storytelling into something magical. Someone who inspires both young readers and nature lovers alike. An explorer at heart, a conservationist by passion, and an author by choice. Please join us in welcoming back a proud Lovedale alumnus, Mr. Deepak Dalal. After completing his chemical engineering in the US, Mr. Dalal returned to India with something more powerful than a degree. He had curiosity that took him deep into the heart of our country, where he discovered the breathtaking beauty of India's wild places. From the coral reefs of Lakshadweep to the snowy peaks of Ladakh, the dense forests of Ranthambore to the rugged Sahyadri hills, his travels turned into tales, and those tales became the Vikram Aditya Adventure series, also known as the Indian version of the Hardy Boys. But these aren't just stories about adventure. Each book echoes a message about wildlife and conservation, an effort to inspire young readers to care for the natural world around them. And now, he's taking flight again with his latest project, the Feathered Tale series. Books that are written straight from a bird lover's heart, a tribute to his lifelong fascination with our winged friends. His stories make us want to dream more, explore more, and care more. Ladies and gentlemen, it is our true honor to welcome back Sir Deepak Dalal. Now, I'd like our headmaster to present a memento to our chief guest as a token of appreciation and our gratitude. Thank you, sir. Now, I request our chief guest, Mr. Deepak Dalal, to say a few words. Good afternoon, everybody. It's a pleasure to be back in this hall after 50 long years. And as they introduced me, I am a writer. After passing out of this school, I became an engineer. But the passion for engineering wasn't really there. I think my entire experience in school molded me very differently. I originally was from Mumbai, and you know how it is. School out there was a building. In most cities, there's just nothing more than a building out there. And I came to this school, Lawrence, and suddenly it was such a different place. The school campus, 750 acres. We had Lovedale Lake, Lovedale Station. We had all the 3 campuses, Big Hill. I don't know how many times I climbed Big Hill. I used to love it. And what Lawrence did, and all those 750 acres of space we had, it just put me, I would say if I was living in Mumbai, I'd never be doing what I'm doing now, which is writing books for children and traveling. Because Lawrence molded me towards being a wildlife person, towards being an outdoor person who had curiosity for nature. That bond with nature was established here. And that really, for me, Lawrence molded me, gave me a direction in life. And all of you who are studying here, you're really lucky to be in this school with all the area you have, the spaces you have, the wilderness zones, all the cricket pitches and the sports pitches. It's a wonderful experience that lies ahead of you.
And I hope the school will give you the same kind of molding or set you in the direction which it did for me. Thank you so much. Thank you, sir. From classical grace to modern flair, from heartfelt performances to high energy acts, this afternoon promises it all. Each performance is a reflection of our students' hard work, creativity, and passion. So lean in, clap loud, and enjoy this special showcase of the Laurentian spirit. To begin this beautiful evening, we honor our rich tradition by invoking the blessings of God through the timeless art of Bharatnatyam. This performance is not just tradition. It's an offering of reverence and devotion, a sacred invitation for Lord Murugan's grace to fill the space with positivity and blessings. And with that, let us begin with the invocation dance. జన్న జన్ను తక్క తది తాం తన తాం తగదరిగర తగ గిర్ర కిట్ట కిన్న తక్క తక్క ది తగ తోం తగదరిగర తగ తోం తక్కుం తక్కుం తక్కిట్ట జన్ను తాం దిమి తాం తగదరిగర తగ జంత 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 కిట్ట దిమి తాం కిట్ట తాం తగదరిగర తగ జన్న జన్న కిర్ర కిట్ట జంతరి జంతరి కిట్ట తగ జన్న 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 కిర్ర కిట్ట తగ జంతరి జంతరి కిట్ట తగ తగర తగది తగం తగరం తదిగిట తోం తగదరిగిట తోం తగదిగు తదిగిట తోం తగర తగది తగం తగరం తదిగిటం తగదరిగిటం తగదిగు తదిగిటం తగర తగది తగం తగరం తదిగిటం తగదరిగిటం తగదిగు తదిగిటం சுற்றி வருகுது 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 வேல் முற்றும் வினையது விலகுது 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 பார் கற்ற தமிழது இனியது 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 நான் முற்ற பயனது பெருகுது மனமது உருகுது சுற்றி வருகுது 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 வேல் முற்றும் வினையது விலகுது 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 பார் கற்ற தமிழது இனியது 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 தான் புற்ற பயனது பெருகுது மனமது உருகுது கான் சுற்றி வருகுது 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 வேல் முற்றும் வினையது விலகுது 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 பார் கற்ற தமிழது இனியது 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 தான் புற்ற பயனது பெருகுது மனமது உருகுது கான் தோ கிட்ட தக தரி கிட்ட தக தக தோ கிட்ட தக தரி கிட்ட தக தக தி தோ கிட்ட தக தரி கிட்ட தக ஜன்னு தாம் தக ஜம் த திங்கின குதத ஜம் த திங்கின குதத ஜம் த திங்கின சரவண பவ குகன் அழகன் 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 ஹரஹர சிவன் மகன் முருகன் 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 அன்பரும் குருபரன் குமரன் 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 அறுபடை அருமுகன் பரதன் 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 சரவண பவகுகன் அழகன் 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 ஹரஹர சிவன் மகன் முருகன் 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 அருகடும் குருபரன் குமரன் 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 அறுபடை அருமுகன் பரதன் 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 Takatadam, dim dim, takatanam, tum tum, takatarum, num num, takatadi, takitakam, 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 takatarigadum, takatam, 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 takatarigadum, tatam, 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 takatarigadum. Muruga, 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 மலராறு தமிழாறு மதவாக மலர்ந்திருந்தவன் குமரா 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 குமாரா கல்லேறி விளையாடி திருவாக மகள் உயர்ந்தவன் மலையாறு கலில் சேவ கொடியேந்தி மகிழ்ந்தமர்ந்தவன் மறையோடு மடியாறு மனவேந்தி உகந்தருபவன் மலராறு தமிழாறு மதவாக மலர்ந்திருந்தவன் மயிலேறி விளையாடி திருவாக மகள் உயர்ந்தவன் மலையாறு கலில் சேவ கொடியேந்தி மகிழ்ந்தமர்ந்தவன் மறையோடு மடியாறு மனவேந்தி உகந்தருபவன் எரிக்கும் நெருப்பின் பொறியன உதித்தவன் நீ மயக்கும் மலைத்தோன் வள்ளிய மணந்தவன் நீ வியக்கும் விதத்தில் சூடனை அழைத்தவன் நீ மனத்தால் நினைத்தார் வினையற அருள்பவன் நீ எரிக்கும் நெருப்பின் பொறியன உதித்தவன் நீ
மயக்கும் மலைத்தேன் வள்ளிய மணந்தவள் நீ இயக்கும் விதத்தில் சூரனை அழித்தவள் நீ மனத்தால் நினைத்தார் வினையற அருள்பவன் நீ தென் கிட்டத்தட்ட தொணக்கிட்டத்தட்ட தாழதி நம் கிட்டத்தட்ட நமக்கிட்டத்தட்ட தாழதி ஓ கிட்டத்தட்ட தோக்கிட்டத்தட்ட தாழதி புதி புத்தாழத்தி புதி புத்தாழ்த்தித்த நம் கிட்டத்தட்ட நம் கிட்டத்தட்ட Thank you to our talented dancers for their graceful and powerful performance. Let us carry this divine energy with us throughout the afternoon. Don't even think about looking away, because what's coming next might just be the highlight of the afternoon. Coming up is a graceful and energetic performance by a dynamic duo, Vrinda and Mrinmay. Let the rhythm and synergy sweep you away. Thank you, Vrinda and Mrinmay, for that mesmerizing display of talent. All right, let's switch gears and take a quick trip through time. Retro style! Coming up is a medley of classic hits brought to life by our vibrant school choir. This next segment is basically a musical roller coaster. Emotions, drama, and serious sing-along vibes. We start with Living Next Door to Alice, a song packed with nostalgia and just a tiny bit of emotional chaos. It's basically what happens when curiosity meets heartbreak and a whole lot of confusion.
Next up, we bring the energy with Mamma Mia, a high-octane classic that proves you don't need coffee when you've got ABBA. Expect rhythm, smiles, and intense toe-tapping. And we close with Hasta Mañana, a soft, sentimental tune about goodbyes. But not the sad kind, the kind that says, hey, maybe I'll see you tomorrow. Get ready to sing along. Here comes our choir. She said I supposed to her.
an incredible performance. Thank you to the choir for taking us through this musical journey with so much energy and joy. Up next, a vibrant semi-classical dance in honor of our beloved Lord Ganesha, patron of beginnings, remover of obstacles, and everyone's favorite elephant-headed deity. With energetic footwork and expressive gestures, this performance is a dynamic tribute to Ganesha's joy, power, and charm. Let's welcome the dancers. What an amazing tribute to Lord Ganesha. Thank you to our dancers for the energy, joy and positivity. जहां प्रगति की आंधी ने रसायनों के तूफान से पृथ्वी को घायल किया, वहीं यह कहानी हमें याद दिलाती है कि विकास के नाम पर हमने भूदेवी के आंचल को ही छलनी कर डाला. We now bring to you a performance that does not just speak to the mind, but to the conscience. Today's skit takes us deep into the heart of rural India, where the green fields of yesterday are turning grey, not with age, but the weight of neglect and insensitivity towards the land. This play is a call to rethink, To relearn And to return to organic sustainable farming, because we do not feed poison to our mothers and we should not feed it to Mother Earth. presented with sincerity and purpose. This is more than a performance. It's a message we hope stays with you long after the applause fades. Please welcome our performers.
मुझे तो बोला है हो जा तैयार, और खुद के साथ होंगे 2-4 यार। अरे 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 मेरी नटी, तू तो लग रही है कोई परी। बस तू रहा कर खुश, हंसती रहा कर। आए हाय क्या बात है मेरी नट, तू तो हो रहा है बड़ा नट खट। चल अब बता भी दे आज का क्या प्रोग्राम है, कहाँ दिखाना है आज का नाटक, अब बता भी दे फटाफट। आज तो तुझे लेकर चलता हूँ खूब बड़ी महफिल में, बड़े बड़े लोग, खूब बड़ा जलसा हो रहा है वहाँ। अच्छा तो वहाँ तो बड़ा मजा आएगा। अरे अंग्रेजी स्कूल है, बड़ा नाम है लॉरेंस स्कूल का। आज वही तो दिखानी है अपनी कला। पढ़े लिखे लोग हैं सब। पढ़े लिखे लोग, मॉडर्न लोग, वे सब तो दिमाग वाले लोग होंगे, मन की बात क्या ही समझेंगे। वे सब पैसे के लिए ना जीते हैं। अरे अरे चुप कर, हम आ गए उनके सामने, समझेंगे क्यों नहीं। इनके बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ, ये अपने बच्चों का सुंदर भविष्य चाहते हैं। कहता तो तू ठीक ही है, तो क्यों ना आज इनको बताया जाए कि रोज इनके बच्चे अपने अंदर एक तरह का जहर ले रहे हैं। कैसा जहर? क्या कह रही है तू? कुछ मत पूछ। अगर तेरे दर्शक सच में पढ़े लिखे हैं और अपने बच्चों का अच्छा भविष्य चाहते हैं तो खुद ही समझ लेंगे। चल अब शुरू करते हैं। चलो फिर शुरू करते हैं। सुनिए, शाम हो गई, खाना तैयार हो गया है, पर ये राजेश अभी तक नहीं आया। खेतों की ओर गया था, बहुत मेहनत कर रहा है आजकल। रुको मैं बुला कर लाता हूँ। राजेश, ओ राजेश, जल्दी आ, खाना तैयार है, तुम्हारी माँ बुला रही है। अभी आता हूँ पिताजी। बेटा बहुत समय लग गया आज। हाँ, सारी सब्जियां तोड़ी, उन्हें बोरों में भरकर गाड़ी में लोड किया, बहुत थक गया। माँ जल्दी खाना लगा दो, उसके बाद मैं सोने जाऊंगा। सुबह सब्जी की गाड़ी मंडी लेकर जानी है। सब्जी? अभी 3 दिन पहले ही तो सब्जियां मंडी में लेकर गए थे, इतनी जल्दी फिर फसल तैयार हो गई? हाँ, और इस बार पहले से भी अच्छी फसल हुई है। पर कैसे? इस केमिकल की वजह से। एक इंजेक्शन लगाओ और थोड़ा सा छिड़को, रात रात में सब्जी तैयार। पर बेटा ये तो सही नहीं है, इस केमिकल वाली सब्जियों को खाने से लोगों को खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं। होती है तो हो जाए, मुझे पैसा कमाना है। पर बेटा हमें ऐसे पैसा नहीं कमाना। हाँ बेटा, सब्जियां हमने भी उगाई थी, पर हमने कभी ऐसे केमिकल का प्रयोग नहीं किया जिनसे खाने वाले की जान को खतरा हो जाए। अरे पिताजी, आपके समय में खेती के तरीके अलग थे। आजकल सभी इस केमिकल का प्रयोग कर रहे हैं और खूब पैदावार बढ़ा रहे हैं, तो हम पीछे क्यों रहे? बापू लो, ये पैसे रखो, इस बार की फसल की कमाई। अच्छी फसल हुई है इस बार। इतने पैसे? पहले तो इतनी अच्छी फसल कभी ना हुई, इस बार क्या चमत्कार हुआ? ये केमिकल और कीटनाशक के छिड़काव का कमाल है। बेटा ये केमिकल कहीं धरती और मिट्टी को खराब ना कर दें।
हमारे टाइम पर इन केमिकल का उपयोग कोई नहीं करता था। मेरी मानो तो इनको छोड़ो और देसी खाद का उपयोग करो। बापू, देसी खाद से इतनी अच्छी फसल कभी हो ही नहीं सकती। ये तो केमिकल और कीटनाशक दवाइयों से फसल की पैदावार बढ़ी है। आजकल हर कोई इसका प्रयोग कर रहा है। पर बेटा, आने वाले समय में इनके परिणाम ठीक नहीं होंगे। ये केमिकल धरती को बहुत नुकसान पहुंचाएंगे। मुझे तो इनका प्रयोग सही नहीं लगता। अरे बापू, आप चिंता ना करो, आम खाओ, पेड़ क्यों गिन रहे हो? आप तो बस नोट गिनो, नोट। हे धरती माँ, ये आजकल के बच्चे नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हो सके तो हमें माफ कर देना। मैं हजारों सालों से बिना रुके बिना थके आप सभी का बच्चों की तरह पालन पोषण कर रही हूँ। मैं तब भी थी जब आप लोग नहीं थे, और मैं तब भी रहूंगी जब आप लोग नहीं रहेंगे। पर अब ऐसा लग रहा है कि मैं थक रही हूँ। आपकी धरती माता थक रही है। रसायनों का छिड़काव, रासायनिक खाद और इन सभी के कारण पानी और हवा में जहरीलापन, उफ, यही कारण है कि मैं थक रही हूँ। सब जानते हैं कि इन रसायनों के प्रयोग से मेरा शरीर वैसे ही जलता है जैसे आपके ऊपर कोई तेजाब डाल दे। लगता है मेरे बच्चों को मेरे दुख का अंदाजा नहीं है। मेरी मिट्टी बंजर हो रही है। ये रसायन मेरी मिट्टी के उपजाऊपन को खत्म कर रहे हैं और उसमें पाया जाने वाला नमक मेरे शरीर को मिर्च की तरह जला रहा है। मेरी फसलों की पैदावार कम हो रही है। मैं धीरे धीरे और थक रही हूँ। लेकिन अब मुझे याद आता है कि पहले मैं बहुत सुंदर थी, बहुत प्रसन्न थी, हमेशा हंसती रहती थी। मैं तुम्हारी माँ सुंदर क्यों ना होती? मेरे बच्चे मेरा अच्छी तरह ख्याल जो रखते थे, प्राकृतिक और जैविक खेती करते थे, और मैं भी बदले में उन्हें खूब अच्छी फसल देती थी। हम सभी का जीवन बहुत खुशहाल था। हरे भरे खेत और खुशनुमा माहौल। अरे का हो रामलाल भैया, फसल कैसी हुई इस बार? अरे रामू भाई, क्या बताऊं, खूब अच्छी फसल हुई है। धरती माँ की बड़ी कृपा रही। तेरी फसल कैसी रही? जैसी तुम्हारी वैसी हमारी। धरती माँ ने छप्पर फाड़ के दिया है इस बार। तो बढ़िया उत्सव मनाया जाए, क्या कहते हो? हाँ, जरूर मनाया जाए। हाँ, बढ़िया उत्सव मनाया जाए। सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती।
सुनाते हैं, जीवन का राज सुनाते हैं। गम कोसों दूर हो जाता है, खुशियों के कमल मुस्काते हैं, खुशियों के कमल मुस्काते हैं। सुन के रहट की आवाजें, सुन के रहट की आवाजें, यूं लगे कहीं शहनाई बजे, लगे कहीं शहनाई बजे। आते ही मस्त बहारों के दुल्हन की तरह हर खेत सजे, दुल्हन की तरह हर खेत सजे। मेरे देश की धरती, देश की धरती सोना उगले उगले हैं हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। मनुष्य हमेशा धरती की गोद में रहता आया है, लेकिन आज मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि मेरे इतने उपकारों के बदले आपने मुझे क्या दिया है? ये जहरीले रसायन और खाद जो धरती को बंजर कर रहे हैं, उर्वरकता को बर्बाद कर रहे हैं। आप अच्छी पैदावार के लालच में जो रासायनिक खाद अपने खेतों में डाल रहे हैं, वो अभी तो लाभ देगी, लेकिन लंबे समय में उसी रासायनिक खाद का नुकसान भी है। रासायनिक खाद जहर समान है। इससे फसलों में पानी की खपत भी बढ़ गई है, जिससे खेती की लागत बढ़ गई है और पानी का स्तर जमीन के काफी नीचे जा रहा है। बच्चों, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैंने तुम्हें सुख से जीने के लिए पर्याप्त संसाधन दिए हैं, पर तुम्हारे लालच की पूर्ति के लिए नहीं दिए। ऐसा लगता है थोड़ी सी अधिक पैदावार और अपने लालच के लिए आप सब अपनी अगली पीढ़ी, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना भूल गए हैं। सोचो, क्या तुम अपने बच्चों को ऐसे खेत देना चाहते हो जो बंजर हो? लेकिन धरती माँ, आपको सुरक्षित और प्रसन्न रखने का उपाय क्या है? धरती एक, परिवार एक, भविष्य एक। इस मूल मंत्र को आत्मसात कर लो। प्राकृतिक संसाधन को बचाओ, प्राकृतिक खेती को अपनाओ। प्राकृतिक संसाधन को बचाओ, प्राकृतिक खेती को अपनाओ। रासायनिक विष से दूर हटो, स्वस्थ जीवन की ओर बढ़ो। Thank you to our performers for such a formidable and thought-provoking skit. You've truly reminded us of the importance of sustainability and caring for our planet. Coming up next, a voice so good, even the school bell might stop to listen. Sayuri is singing. Why do you only call me when you're high? Don't worry, it's just a title. No one's breaking rules here. Don't worry, she's not actually judging anyone's call history, unless your ringtone still sounds like a frog from 2005. Then, maybe just a little? I haven't seen my phone in months. If anyone out here is interested in knowing how I communicate my secrets from school, please do see me after the show. I've got a printed map, a compass, and a carrier pigeon you can borrow. This song talks about late night calls, but here the only thing we call at night is lights off. Now, let's give it up for someone who does not need a ringtone to make noise. Here's Sayuri. The mirror's image tells me it's home time, but I'm not finished, 'cause you're not by my side. As I arrived, I thought I saw you leaving, carrying your shoes,
Decided that once again I was just dreaming, bumping into you. Now it's 3 in the morning and I'm trying to change your mind. Left you multiple missed calls and to my message to reply. Why'd you only call me when you're high? High. Why'd you only call me when you're high? Somewhere darker, talking the same shine. I need a partner. Will all you out tonight? It's harder and harder to get you to listen. More I get through the gears, capable of making alright decisions, having bad ideas. Now it's 3 in the morning and I'm trying to change your mind. Left you multiple missed calls and to my message you reply. Why'd you only call me when you're high? High. Why'd you only call me when you're high? Thank you. Sayuri, that was incredible. You've hit more highs than our class averages before finals week. And now, time to ground ourselves again with the pure, intricate notes of Carnatic music, bringing balance to the energy we've built. Please welcome Sanath, who will be performing Raghuvamsha Sudha in Ragam Katana Kutuhalam, set to Aditalam, a beautiful blend of culture and calm, composed by Patnam Subramanya Iyer. Sare madani da pa sa sani da pa magari sa. Raghuvanshasudambodhi Chandra Shri Raghuvanshasudambodhi Chandra Shri Raghuvanshasudambodhi Chandra Shri Rama Raja Rajeshwara Raghuvanshasudambodhi Chandra Shri Rama Raja Rajeshwara Raghuvamsha Sudambodhi Chandra Shri. Aghamegama Aghamegama Ruta Shikara Aghamegama Ruta Shikara Aghamegama Ruta Shikara Aghamegama Ruta Shikara Asuresha Mrigendravana Jagannatha Asuresha Mrigendravana Jagannatha Sri Maga Re Sri Mamada Daniga Gapasa Sani Da Pamaga Pamaga Re Sri Maga Re Sri Mamada Daniga Gapasa Sani Da Pamaga Pamaga Sri Mamada Daniga Gapasa Sri Mamada Daniga Pamaga Re Raghuvamsha Sudambodhi Chandra Shri Rama Raja Rajeshwara Raghuvamsha Sudambodhi Chandra Shri. Jamadagni Jagarva Kandana Jamadagni Jagarva Kandana Jai Rudradvi Smita Bandana Jai Rudradvi Smita Bandana Kamalata Kamalata Naya Mandana
शौर्य श्री वेंकटेश सारे मगरि सरि मम దని గా గ ప స స ని ద ప మ గ ప మ గ దని రి మ మ ద ని గ ప ప స ద రి రి మ మ ని రి రి స ద రి ని ద మ మ గ రి రఘువంశ సుధాముది చంద్ర శ్రీ రామ రాజ రాజేశ్వర రఘువంశ సుధాముది చంద్ర శ్రీ मोदी चंद्र श्री मोदी चंद्र श्री Thank you, Sanat, for this soul-soothing performance. You have truly taken us on a journey through the classical rhythms and melodies that connect us to the centuries of tradition. What happens when storytelling meets tradition? You get something timeless. Our next performance is a powerful retelling of one of India's greatest epics, the Ramayana. Through Bharatanatyam, we revisit the eternal tale of Rama, Sita, Lakshmana, Hanuman and Ravana. It's a journey of devotion, duty and dharma, brought to life through eloquent movement and music. Let the dance drama begin. The Ramayana is a timeless epic of virtue, devotion and destiny. It begins in the grand city of Ayodhya, where King Dasaratha is blessed with 4 sons, the eldest being Rama, an embodiment of righteousness. Under sage Vishwamitra's guidance, Rama proves his valor and reaches Mithila, where he breaks Lord Shiva's bow, winning the hand of Princess Sita. Their sacred union marks the beginning of a legendary journey. Witness the legend of Ramayana, where light conquers darkness, truth triumphs over deceit, and the spirit of righteousness reigns supreme. Let the epic unfold. श्री रामचंद्र
The story takes a sorrowful turn as Queen Kaigehi, swayed by Manthara, demands Rama's exile for 14 years. Bound by duty, Rama willingly renounced the throne. Sita and Lakshmana chose to follow him, leaving behind the splendor of Ayodhya for the unknown depths of the forest. Thus begins a journey of sacrifice, devotion, and destiny. जलप्रवाहपावितस्थले कलेवलम्ब्यलम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकातमट्टमट्टमट्टमन्निनादवड्डमर्वयं चकारचण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिवं शिवं जटाकटाह सम्भ्रम भ्रमं निलिम्ब निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनिज्वलल्ललाट पट्टपावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रशिक्षणं
प्रसन्नाञ्जनेयं श्रीरामदूतं महाकाय वीरं ನಡೆಯಲಿ ಅಸುರರ ಎದುರಿಸು ನವಿಚರುಗಲಿ ನಡುಗಿಸು ಧರ್ಮ ಉಳಿಸೋ ಸತ್ಯ ಮೆರೆಸೋ ದೇಹಿ ಬಾರೋ ಜಯ 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 ಬಲಲಾಗಿ ಜಯ 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 ರಘುನಾಥ ಕಲಾಗಿ ಜಯ 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 समान स्वधनुष्टंकार भय ರಾಮನಾಮ ಹಾಡಿರೋ ರಾಮ ಬರುವನು ಅವನ ಹಿಂದೆ ಹನುಮನು ಇದ್ದೇ ಇರುವನು ವಿಶ್ವರೂಪಿ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿ ರಾಮಚಂದ್ರನು ವಿಶ್ವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಮ ಮಾದರಿ ಶ್ರೀರಾಮನು ವೇದ ವೇದಾಂತ ಓಂಕಾರ ರಾಮನಾಮ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಸಂಚಾರ ಹಾಡೋ ಹಾಡೋ ಜಯಕಾರ ರಾಮನಾಮ ಹಾಡಿರೋ ರಾಮ ಬರುವನು ಅವನ ಹಿಂದೆ ಹನುಮನ ಇದ್ದೇ ಇರುವನು For this amazing performance that beautifully captured the spirit of the Ramayana. All right, everyone, ready for a little rock and roll? Up next, we got a performer who's ready to set the stage on fire with her vocals, presence, and maybe a little rock and roll drama.
And the vocals, we will rock you. Sing along. We will rock you. Incredible! I didn't know. We were hosting India's Got Delusion. Now, Myth, that was something. But maybe let the actual performer perform this one. Hey, don't be jealous. Some people say I sound like young Freddie Mercury. Yeah, some, mainly his mirror. Anyways, give it up for Gia with her song Feeling Good. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn. It's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on a tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Driving dry out on the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when they stand, that's what I mean. And I know it's a new world, and a whole world for me. Stars when you shine, you don't know me. Sin of the kind, you know what I need. Freedom is mine, and that's what I need. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. It's a new day, it's a new day, it's a new life. It's a new life, it's a new life, it's a new life for me. And I'm feeling good. I'm feeling good. And I'm feeling good. And I'm feeling Thank you. Gia, that was amazing. And now, the moment we've all been waiting for, the grand finale. Get ready for a performance by a Western orchestra that will make your heart race and your feet want to dance. Violins soaring, pianos belting out notes, and guitars rocking. Expect a storm of harmonies, emotions,
and movements that make you wonder why you haven't joined the orchestra yet. No, actually, we're all secretly jealous. These talented musicians have put in a lot of effort, and today they're here to remind us of the power of music to move, to inspire, and sometimes make us wish why we haven't learned an instrument yet. Get ready to be blown away. It's time for our symphony.
प्यार की, किसी ने जान ली, किसी ने जान दी। Wow. Can we have another round of applause? Because that was absolutely electrifying. My heart is still trying to catch up with that tempo. That was a real performance now, wasn't it? I feel like I had an entire concert performance. Who needs tickets when we got talent like this? That was entirely incredible. Now that's how we close the show, with music that absolutely rocks. अंत वही नहीं जो खत्म हो जाए, अंत वही नहीं जो खत्म हो जाए, हर अंत में एक नया आरंभ हो जाए। जिंदगी की राहों में हर मोड़ पर, जिंदगी की राहों में हर मोड़ पर नई उम्मीद और नए सपने हमारे साथ हो जाए। Yes, every chapter, no matter how it ends, paves its way for something new, something better. Every journey has its ups and downs, but it's the new beginnings that makes life so exciting. Just like this event today, each moment we have shared will become a part of our memories. But it's the next step, the next dream, and the next challenge that will drive us forward. At the Lawrence School, Lovedale, we believe in moving forward with new hopes, new dreams, and a heart full of possibilities. Each day is a new beginning, a new chance to grow. As we step forward into tomorrow, let us carry with us the lessons we've learned, the dreams we've nurtured, and the spirit of never giving in. Thank you for being a part of our wonderful celebration. Your presence today makes all the difference. We extend our sincere gratitude to the headmaster, deputy headmaster, the bursar, the DOA, as well as all the teachers in charge and the support staff whose invaluable time and dedication has contributed in making this event a grand success. Happy Founders Day! Here's to new beginnings, fresh hopes, and a bright future. Thank you!